So have you been in a situation where you're just guessing कि निफ्टी कितने पॉइंट्स पे खुलेगा 9:15 AM पर, या फिर आपने ट्रेड्स लगाए हैं इन द मॉर्निंग फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग और मे बी पोजिशनल ट्रेडिंग, एंड मार्केट एकदम से गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है, एंड ऑल योर ट्रेड्स गॉट हेवायर. If you can relate to this situation, so this video will be absolute gold. Hey guys, this is Aditya, investor, trader and mentor in stock markets. So today we are going to solve this problem of yours by this thing called SGX Nifty. So what is SGX Nifty? एक बार इसको properly समझते हैं. So SGX stands for Singapore Stock Exchange. So Singapore Stock Exchange. Nifty stands for of course Nifty 50 जो हमारे NSE की इंडेक्स है. So निफ्टी का फ्यूचर जो है वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है. एंड सिंगापुर बीइंग अ वेरी बेसिकली फाइनेंशियल हब एटलीस्ट फॉर एशिया. सो वहाँ पर बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, एंड व्हेनेवर फॉरेन इन्वेस्टर वांट्स टू एक्चुअली टेक एक्सपोजर इन निफ्टी, what they do is they don't actually come to India. वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में they have their accounts and वहीं से they buy SGX Nifty and they get exposure for Nifty. Why? Because of course India में laws are not very, you can say, flexible for foreign investors and all. So that is a small problem. So इसलिए big investors actually prefer to go through the route of SGX Nifty. Now as a trader or a personal trader even, how does this help us? So SGX Nifty, the time for SGX Nifty in IST is 6:30 AM to 11:30 PM, and हमारे times of course 9:15 AM to 3:30 PM, which means that even before the market opens at 9:15 AM, SGX Nifty is trading right there, and at almost exactly whenever you see it, whenever you open SGX Nifty, the SGX Nifty at let's say 9:15, the level of SGX Nifty, or let's say change of SGX Nifty is almost exactly where the market opens as 9:15 AM. So this will give you a clear head start exactly where the market will open, and आप अपने सारे ट्रेड्स उसके हिसाब से प्लेस कर सकते हो. तो यू विल नेवर हैव दिस सिचुएशन कि एकदम से यूर गेटिंग पैनिक्ड एंड फर्स्ट 15-20 मिनट्स में यूर जस्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड कि एग्जैक्टली मार्केट किस तरह आ रहा है एंड आपको क्या करना चाहिए. So how can you use it? Simple as that, I'll tell you. Go to sgxnifty.org. This is a website, just simply go to it, and it's a very simple website. वहीं पर आपको दिख जाएगा what is Nifty, what is the change level, and that's about it. हमें और क्या चाहिए. वहाँ पे charts भी available होंगे, but of course we don't care about the charts क्योंकि हमारे Indian markets में भी charts हैं, तो you can always use the real Nifty chart. But the key here is you will see the change. What is the change? And that is basically the change which you will definitely see in the Nifty when it opens. And अब seconds का जो useful factor है that many people actually they go through Dow Jones, and वो Dow Jones देखते हैं let's say 1:30 AM तक. So by the way, Dow Jones or American markets closes at around 1:30 AM IST. तो many people actually follow Dow Jones, but if you're a trader ना, it is better to follow SGX Nifty क्योंकि SGX Nifty also closes at around 11:30 PM. So it does close at 11:30 PM IST. again I'm talking जो भी मेरे टाइम्स बता रहा हूँ सारे IST हैं. तो इससे आपको क्या होगा, आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि निफ्टी किस तरह जा रहा है, क्योंकि डाउ जोन्स कैन मूव लिटिल डिफरेंटली एज कम्पेयर टू निफ्टी एट टाइम्स. So I feel if you're an intraday trader especially, or even a short-term trader, swing trader, SGX Nifty is key and you should definitely follow it. Go to sgxnifty.org and everything will be there, right? So this is how you use SGX Nifty if you're a trader. Now if you like the video, hit the like button. If you dislike the video, hit the dislike button. And also in the comment section मेरे को बताओ exactly आपको क्या चीज़ें और सीखनी है, क्योंकि ये जो topic है ये मैंने actually comment section में लिया था. तो a person said that I have this problem कि gap up होता है, gap down होता है stock market में, पूरे time confused रहता हूँ, first 15 minutes बिल्कुल haywire होता है. So उसकी वजह से ही I made this video. So tell me in comment section below exactly what mode you want to learn, and I will be sure to post these small snippets or small videos in YouTube and everywhere so that you always stay financially empowered. See you then.